पहली बार वॉक किया, बहुत मज़ा आया मुझे। जब मैं वॉक कर रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं चल रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ या मैं उड़ रहा हूँ। तो जब मैं वापस आया तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं उड़ा नहीं, मैं चला। इस समय रैंप में चलना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था, पर अब जबकि पहली बार कर चुका हूँ तो अगर सेकंड टाइम करूँगा तो फिर इतना मुश्किल नहीं होगा। इन दो सुंदरियों ने मुझे बहुत हेल्प किया, मुझे वहाँ बिठा के पंप अप किया, एकदम मुझे मोटिवेट किया, मोटिवेट किया। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू देम, ऑफ कोर्स। Yeah, sir. Dia, you look stunning in the outfit. How did it feel walking on the ramp in Shantanu? Thank you for the compliment. I felt like a princess, and the outfit is designed and inspired. Nikhil calls it by Dia. no, Nikhil calls it the tribal princess attire, and I really felt very exotic tonight. Thank you. Thank you. Thank you for wearing it. It was absolutely wonderful for me. I'm somebody who has been wearing their clothes for very long, and every time I think they can't, give me a better outfit, they redeem themselves entirely because they just come up with better and better clothes, and this is an example for that. And Do you guys feel nostalgic because you two have been walking around? well, I think we just keep coming back with certain intervals, so it's not that we go away from the ramp for so long, and it's just great for us to be here. We get a lot of exposure, we get to meet you guys, so it's not so far back that we walked the ramp the last time, so it's not a nostalgic feeling, but it is a great feeling. I felt nostalgic. I just felt like I was gonna have a panic attack, but otherwise I was fine. Neha, why black? Well, Well, I'll tell you why Nikhil, black. Nikhil. Because black is sexy, black is beautiful, and black is sexy. How do you say in Hindi? Black sexy है. Yeah, black बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगता है इंडियन बॉडीज़ पे, बिकॉज इंडियन स्किन टोन थोड़ा डस्की होता है, तो ब्लैक और भी ज़्यादा इट कम्स आउट ब्यूटिफुली. एंड विद ब्लैक वी हैव गिवन अ लिटिल बिट ऑफ ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर ज्वेलरी व्हिच फर्दर एनहांसेस द ब्लैक. दिया, why red और लाल क्यों पसंद है आपको? I think निखिल को मुझे लाल कपड़ों में देखने से प्यार हो गया है, क्योंकि वो जब भी इस वक्त जो भी मेरे लिए कपड़े बनाते हैं वो लाल ही बन जाते हैं. इट स्टार्टेड विद एसिड फैक्ट्री, जिसके लिए शांतनु-निखिल मेरे कपड़े डिज़ाइन और स्टाइल कर रहे हैं, and it hasn't ended. No. And I love it. I think it's a great color on me. I've discovered red thanks to Nikhil. You know, red is the color of the Indian woman, and जब आप red color देखते हैं, और the first thing that you think of when you think of red, you think of India. That's why red. लास्ट में फेस्टिव सीजन नजदीक है, मतलब क्या सोचा है फेस्टिव सीजन के लिए, क्या ठीक लगेगा आपकी नज़रों में, आपकी शो स्टॉपर की नजरिए में? Well, I think सबको शांतनु-निखिल के कपड़े पहनना चाहिए. उनके स्टॉल में बहुत अच्छे कपड़े हैं फेस्टिवल सीजन के लिए, तो आप सब जाएं, उनके पास से ढेर सारे कपड़े खरीदें. I'm sure Sonu and yeah, I agree. I'll collect my checklist. मेरा outfit आया। Dia, when do we see acid factory? Next year. So it's for the designers. How this is? One second, the gentleman was talking to Sonu. Just one moment. What was your question, sir? मेरा outfit black है because I'm the black sheep over here. Now you're being modest. How does Shivas and the rest of the fashion? It's not a difficult tour at all because it is How different? how different because it's a business to consumer event, unlike other trade events which is more B2B, business to business. यहाँ पे आपको अपनी creativity दिखाने का और freedom है, जो हम लोगों ने आज दिखाया. We were just completely dictated and inspired by what we felt was creative, and all these three beautiful people, if they wore it, it just made that even more flattering. नेहा, फेस्टिव सीजन के लिए आपकी तरफ से कुछ सजेशन अपनी पब्लिक के लिए, अपने फैंस? Everybody should be seen in Shantanu-Nikhil clothes, but apart from that, just have a blast. सोनू, आपकी तरफ से कुछ एंडिंग मोमेंट्स, कुछ जब मेरे लिए ये मोमेंट एकदम वैसा था जैसे मैं फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्डिंग के माइक पर गया था, या जब मैंने पहली बार कभी कैमरा फेस किया था. ये मेरे लिए उस तरीके से फर्स्ट टाइम एवर है, तो मेरे लिए तो ये शो ज़िंदगी भर याद रहेगा. एंड थैंक्स टू शांतनु-निखिल. Thank you all. Thank you. रैंप पे देखें